Good morning, students. In today's economics class, we will discuss the topic time series analysis, which is a very important topic in quantitative mathematics. Now, let's begin with the meaning of time series. What is the time series? The set of data collected on the basis of time. कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं अगर वो टाइम के बेसिस पर कलेक्ट किया जा रहा है तो इट इज़ नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस. The set of data collected on the basis of time, such as days, months, years, is called as time series. Okay. Variables of time series. There are two variables of time series, that is dependent variable and independent variables. Dependent variables and some independent variables. We have two definitions of time series. First one is canny and capping. According to Canny and Keeping, a set of data depending on time is called time series. Again, according to Canny and Keeping, a set of data depending on time is called time series. Second definitions we have, according to Croxton and Cowden, a time series consists of data अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकल, कि वो डाटा जो क्रॉनिकली अरेंज किया जाए किसके अंदर किया जाता है, टाइम सीरीज में किया जाता है. ठीक है. नाउ वी हैव कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. वी हैव 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज. फर्स्ट वन इज सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल ट्रेंड एंड इरेगुलर ट्रेंड. नाउ वी विल डिस्कस these 4 variations one by one. Now let's begin with the secular trend. What is the secular trend? Secular trend means the general tendency of the data to grow or decline over a long period of time. Time series show various fluctuation from time to time, but in long period that series has the increased or declining trend in one direction. किसमें? In one direction. This is known as secular trend. Secular trend is usually of two types. First one is linear trend, second is parabolic trend. What is the linear trend? Linear trend means time series takes place by a constant amount. ठीक है, कि when long term rise or fall in a time series takes place by a constant amount, then it is called a linear trend. Okay, in a line, जो ट्रेंड लाइन में चेंज हो रहा है, दैट इज द लीनियर ट्रेंड. और इक्वेशन हम इसके लिए करते हैं यूज, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. सेकेंड इज पैराबोलिक ट्रेंड. पैराबोलिक ट्रेंड क्या होता है? द ट्रेंड इज सेड टू बी पैराबोलिक व्हेन लॉन्ग टर्म राइज और फॉल इन अ टाइम सीरीज इज नॉट टेकिंग प्लेस एट अ डेफिनेट रेट. मैंने स्ट्रेस दिया है नॉट टेकिंग प्लेस एट अ डेफिनेट रेट, कि जब डाटा में लॉन्ग टर्म में राइज और फॉल इन अ टाइम सीरीज इज नॉट टेकिंग प्लेस एट अ डेफिनेट रेट, देन इट इज कॉल्ड अ पैराबोलिक ट्रेंड. द इक्वेशंस फॉर द पैराबोलिक ट्रेंड इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स की पावर 2. सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएशन, सेकेंड ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, और या यू कैन से सीजनल ट्रेंड. Seasonal trend refers to periodic variations in time series when occur regularly within a period of 12 months. As you know, these variations are of regular type and these are easy to be emancipated. ठीक है, कि इनको हम क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेटेड ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर, क्योंकि सीजन है, 1 ईयर में 12 मंथ्स है और 12 मंथ्स ही क्या है, सीजन्स में डिवाइडेड हैं. तो दीज वेरिएशंस आर सीजनल वेरिएशंस. तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय द वेरियस एग्जांपल्स, like agriculture is basically a seasonal occupations. तो कभी हार्वेस्टिंग सीजन आता है, कभी सोइंग सीजन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स ऑल्सो फ्लक्चुएट. ठीक है, prices of food grains tend to be low at the time of harvesting and high at the sowing time. There are lots of examples of the seasonal variations. We will discuss the third type of variation, that is cyclical variations. Cyclical variations refers to
oscillatory variation in a time series which have duration anywhere between 2 to 10 years. ठीक है, साइक्लिकल वेरिएशन में कितनी ईयर्स की वेरिएशन होती है? 2 to 10 years. Cyclical variation arises due to trade cycles. And as an economic student, you know about the 4 stages of the cyclical variation, that is prosperity, recession, depression and recovery. कितनी वेरिएशंस होती हैं इसमें? 4 वेरिएशन, that is prosperity, recession, depression and recovery. These are the 4 stages of the cyclical variations. Cyclical variation जो है ये 4 phases से होकर के निकलता है. ठीक है, you can understand this with this graph. This is the trend line. This line is the trend line and these are the 4 stages of the cyclical variations: prosperity, recession, depression and recovery. Okay, now we have last variations, that is irregular variations. Irregular variations are those variations which occur irregular due to certain accidental causes. These are known as random fluctuations. These variations can be occur due to war conditions, earthquake, flood, industrial strike. So there are lots of examples of the irregular variations also. They don't happen in a definite order. तो ठीक है, कोई डेफिनेट ऑर्डर में ये occur नहीं होते और in a systematic way. Actually these are occur due to the accidental causes. So dear students, this is the topic of the time series and components of the time series. Today we have revised the 4 components. Okay, I hope you have understand this topic. Thank you for watching. Like this video. Okay, thank you.